Hello people, welcome to my channel All You Want. So here I'm back with another video, and if you like the video, do like, share and subscribe to my channel. And today we are going to discuss on NCERT class 6th geography, and we will begin with chapter 1, and the name is the Earth in the solar system. So yeah, without any further delay, let's get started with the video. So let's start with the very first page, in which it's mentioned about full moon, and which is also known as Purnima, which occurs once in about a month. And next, the highlighted word is new moon, which is also known as Amavasya. It also occurs once in almost a month. And also you can watch the night sky the best on Amavasya. And coming to the next point, which is celestial bodies. So celestial body कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, बट जो सन, मून एंड जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन द नाइट स्काई, उन सबको ही हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं. एंड the celestial bodies are very big and very hot, and it is not made of rocks or something. Like, we can't say that the celestial bodies are just made of rocks, but some of the celestial bodies are also made of gases. And one of the celestial bodies, stars, and which is made up of gases, and they have their own heat and light as well. So इस celestial body को बोलते हैं stars. And also the stars are very big and hot. Coming to page number 2, जिसमें कि है about constellations. And constellations are the various patterns formed by different groups of stars. मतलब जो stars की help से जो अलग अलग patterns हमें बनते हुए दिखते हैं, उनको बोलते हैं constellation. जिसमें से एक है उर्सा मेजर, और बिग बियर भी उसको बोलते हैं. एंड उर्सा मेजर का ही एक पार्ट है विच इज़ सप्तऋषि. इसको भी कॉन्स्टलेशन ही कहते हैं, विच इज़ वेरी इजीली हम जिसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 7 स्टार्स, बिकॉज इसका नेम ही सप्तऋषि है. सो यू कैन रिमेंबर दैट विद सप्तऋषि 7 स्टार्स. नेक्स्ट इज़ द नॉर्थ स्टार, और वी कैन से द पोल स्टार, जो कि हमें नाइट स्काई में बहुत ही ईजिली देखने को मिल जाता है, जिससे कि हम नाइट स्काई में भी, रात के टाइम पर भी नॉर्थ डायरेक्शन जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज इट ऑलवेज रिमेन्स एट द सेम पोजिशन. उसकी पोजिशन एकदम फिक्स्ड है. ऑल्सो हम लोकेट कर सकते हैं पोल स्टार को विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, जो कॉन्स्टलेशन है उसकी हेल्प से भी हम पोल स्टार को जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है जैसे कि स्टार्स, जिनकी अपनी हीट एंड लाइट होती है, बट सम ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनकी हीट एंड लाइट्स खुद की नहीं होती है, एंड दे लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, उनको हम बोलते हैं प्लैनेट्स, जो कि सेलेस्टियल बॉडीज़ में ही काउंट होते हैं. एंड द वर्ड प्लैनेट, इसका ओरिजिन हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, विच इज़ नोन एज प्लैनेटिया, एंड विच मीन्स वॉन्डरर्स. And by now you must be knowing that sun is also a star, because वो एक celestial body है जिसमें heat and light जो emit करता है, and also it is the nearest star to the earth. अब nearest के बाद में आते हैं, तो we have a satellite which is natural satellite moon, जो हमारे earth के रिवॉल्व होती है, हमारे earth के अराउंड रिवॉल्व करती है, and it is a satellite, not a celestial body. And here on the same page, it's mentioned one interesting fact about Jupiter, Saturn and Uranus, that they have rings around them, and जो कि the belts or the rings which are made up of debris. Debris here means जो small pieces होते हैं, destroyed pieces of other celestial bodies. उसकी वजह से जो rings बन गई हैं इन 3 planets के around. So that is an interesting fact which is mentioned on page number 2. Also, it is visible from the earth with the help of telescope. And next heading, we have the solar system, which is made up of solar system is a combination of sun, 8 planets, satellites, asteroids, meteoroids, and जिसमें कि sun is the head, जिसको हम head बोलते हैं सोलर सिस्टम का या फिर सोलर फैमिली का. नाउ कमिंग टू पेज नंबर 3, जिसमें कि मैंशनड है कि हर प्लैनेट्स के कितने कितने अपने सेल्फ जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं या फिर मून है जो कि अर्थ के लिए है, वो कितने हैं. एंड किसी किसी प्लैनेट्स के नो मून है, लाइक 0 मून. ऑल्सो इसमें ये मैंशनड है कि जैसे कि अर्थ अपनी जो रोटेशन है वो एक दिन में कंप्लीट करती है. सो उस एक दिन के कंपैरिजन में जो अदर प्लैनेट्स हैं वो अपनी रोटेशन ऑन देयर ओन एक्सिस वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है.
एंड ऑल्सो इसमें मैंशनड है अबाउट द रिवॉल्यूशन विच इज़ अराउंड द सन. तो हर एक प्लानट को कितना टाइम लगता है टू रिवॉल्व अराउंड द सन, वो भी इसमें मैंशनड है. So I am sharing you an image with this. You can read it out and you need to learn this by heart. It is not very compulsory for the 6th class students, but for the government exams and for other exams it is very very important. So you got to learn it by heart. नेक्स्ट वी स्टार्ट विद पेज नंबर 4, जिसमें कि एक डू यू नो है इन विच इट इज़ मैंशन अबाउट सॉल विच इज़ अ रोमन माइथोलॉजी, जिसमें कि इसका मीनिंग होता है सन गॉड, जिसमें सन को गॉड की तरह ट्रीट कर, एंड सोलर विच इज़ रिलेटेड टू सन. Next box we have of word origin, that is geography, which is made up of two Greek words which is G, that means earth, and graphia, which means writing. Here we have three words as well, like more three words, which is geology, which means study of earth, geometry, which means measurement of earth, and geoid, which means resembling the shape और द फॉर्म ऑफ अर्थ, लाइक जो अर्थ की शेप से रिजेंबल करते हैं या जो हम कंपेयर करते हैं, विच इज़ geoid. And next we have a do you know, in which it's mentioned about astronomers. Who are astronomers? Actually the study of the person who studied about celestial bodies and their movement are known as astronomers. And it is mentioned about Aryabhatta also, who was a very famous Indian astronomer. He also claimed that moon and planets shine due to reflected sunlight. Next, we come to the heading, which is mentioned the sun, which is made up of very extremely hot gases, and it gives a pulling force that binds the solar system. And for the whole solar system, it acts as a source of heat as well as light. But it is 150 million kilometers away from the earth, and still the pulling force acts on all the 8 planets and the nearby celestial bodies. And yeah, the next heading is about planets. So to learn the planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. We have to learn them in a serial order. So एंड ये जो प्लैनेट्स एंड जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द सन with a fixed path, and not a circular path but an elongated path, which is known as orbit. And here we can say that Mercury is the closest to the sun and Neptune is the farthest to the sun, because इसी सीरियल में हमें जो planets के names हैं वो learn करने हैं. And Venus is considered as an Earth's twin because उसमें काफ़ी सारी conditions like shapes and sizes जो कि बहुत similar हैं Earth से. So this is why Venus is known as Earth's twin. Coming to the next paragraph, जिसमें कि mentioned है that Pluto was a planet जो कि पहले था till August 2006, but then it got destroyed. And I would not say destroyed, my bad, but जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है IAU, वो इन कुछ प्लैनेट्स को जो है प्लैनेट के तरह ट्रीट नहीं करते हैं. दे आर गिवन अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट्स इन विच इट्स प्लूटो एंड सीरीज 2003 UB313, जिसको एरिस भी बोलते हैं. सो ये कुछ प्लैनेट्स हैं जो कि ड्वार्फ प्लैनेट्स के अंदर काउंट किए जाते हैं. एंड इवन एरिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट जो कि डिस्कवर किया गया है. And next heading we have the Earth. So as we all know, it is the fifth largest planet, that is Earth, and it is slightly like flattened on the poles, like ऊपर और नीचे से. It is not एकदम जो है एकदम circular, एकदम नहीं है like a ball, but it is flat, थोड़ा सा ऊपर से and थोड़ा सा नीचे से, because it's not similar to a ball, but जो हमारी पोल्स हैं दैट आर स्लाइटली फ्लैटेंड. इस शेप को ही जियोइड बोला गया है, एंड जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप्स. ऑल्सो वन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज अर्थ का जो 2/3 पोर्शन है इट इज़ कवर्ड विद वाटर, एंड दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ ब्लू प्लैनेट.
Next heading we have the moon, and it has a diameter of about one quarter that of the earth. Also, it is 3,84,400 kilometers away from, जबकि as I've told you earlier ये सबसे closest है अर्थ के, but still it is 3,84,400 kilometers away from us. Also, the moon revolves around the earth in 27 days, and also it takes 27 days to complete its rotation as well. एंड मून के ऊपर काफ़ी सारी माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन भी हैं, जिससे कि इट कास्ट अ शेडो ऑन द मून, एंड जो कि हमें इधर से अलग अलग कहीं कहीं पे कोई कोई स्पॉट्स दिखते हैं या कुछ और दिखता है, लाइक समटाइम्स वी सी इट एज अ फेसेस. सो वो इसी रीज़न की वजह से होता है, बिकॉज उसमें काफ़ी सारे पीक्स एंड माउंटेन्स एंड डिप्रेशंस, यानी कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर अर्थ के आई एम सॉरी सन की वजह से जो शैडो बन जाती है. सो उसके लिए मून का सरफेस हमें एकदम प्लेन नहीं दिखता. नेक्स्ट वी हैव अ डू यू नो ऑन दिस पेज विच इज़ फिफ्थ ओनली. इट हैज़ mentioned about the travel, like light travels, like the speed of light, which is 3 lakh kilometer per second. Also, it takes 8 minutes to reach the light of the sun on the earth. And one more interesting fact which is mentioned on this page is about Neil Armstrong, who was the first man who stepped on the surface of the moon on 21st July 1969. And now we have a pink box which defines, like it gives a definition of satellite, which is very simple and very short, that which says that it satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way the planets move around the sun. And satellite का natural example definitely you know, which is moon. And human made satellites भी काफ़ी सारी हैं, जिसका जो काम होता है to gather the information of the universe and to get the information about the earth from the universe, or I'm sorry we can say from the space. And there are some Indian satellites के नेम भी इसमें दिए हैं, which are INSET, IRS, EDUSET, and etc. So you need to learn them as an example of artificial satellite. Coming to the last page of this chapter, which is 6, and the topic is asteroids. And the numerous tiny bodies which revolve around the sun are known as asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter only. And asteroids बनते हैं with the explosion of other planets which have exploded million of years ago, and उनके जो भी remains रह गए हैं, so उससे asteroids are formed. Next topic we have about meteoroids. These are again the small rocks or the pieces of rocks which revolve around the sun. And कई बार जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो अर्थ पे भी गिरते हैं, जो कि हमें टूटता तारा जिसको हम बोल देते हैं, बट दे आर बेसिकली मेट्रॉइड्स बिकॉज विच ड्यू टू फ्रिक्शन जो कि हीट कर जाते हैं एंड दे बर्न अप, एंड जो कि हमें एक टूटते तारे की तरह नज़र आता है, बट दोज आर बेसिकली मेट्रॉइड्स विच कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट. एंड अर्थ पर गिरने के बाद इट समटाइम्स क्रिएट्स अ हॉलो, बट कई बार वो ऊपर ही हवा में लाइक जो है बर्न की वजह से वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो समटाइम्स दे डोंट रीच टू द अर्थ. कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, कई बार हमें एक वाइटिश ब्रॉड बैंड दिखता है इन द स्काई, जो कि बैंड होता है मिल्की वे गैलेक्सी का, जो कि हमारी गैलेक्सी है. ऑल्सो इसको एंशंट टाइम में इंडियंस रिवर लाइक आकाश गंगा बोलते थे, बिकॉज इट सीम्स लाइक अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, सो दैट्स वाई इट वॉज अर्लियर नोन एज आकाश गंगा. एंड next term is galaxy, which is made up of billion of stars and clouds of dust and gases and million of galaxies, जो कि फॉर्म करता है एक यूनिवर्स. सो व्हाट डज दिस मीन कि सबसे पहले है यूनिवर्स जो कि सबसे वाइड है, सबसे ह्यूज है. देन देयर कम्स आवर मिल्की वे गैलेक्सी. देन उसके अंदर होता है सोलर सिस्टम, जो कि हम जिसमें हमारा सन आता है एंड अदर प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स सेलेस्टियल बॉडीज़. एंड उसमें सोलर सिस्टम के अंदर भी हमारी अर्थ आती है. सो यू कैन सी, लाइक यू कैन इमेजिन वेयर डू वी लाई इन दिस बिग यूनिवर्स.
सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है एंड आई एम गिविंग यू अ होमवर्क जो कि आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं दैट व्हाई अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून ऑलवेज। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एंड तक बने रहने के लिए बाय।